हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनिमैनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी आर डिस्कसिंग suppression. Before we already discussed suppression in general, natural and artificial suppression, and what Hahnemann wrote about the suppression. Now, today we are going to discuss one more important fact, which are very important during the chronic diseases. And these type of suppression you will see very naturally nowadays. These are nuclear medicines. Nuclear medicines. Nuclear medicines. If we talk about Hahnemann time, Hahnemann did not contend with this even more severe form of suppression, that is radiations and radioactive isotopes. There are lots of examples are there in which the person is in good health when he or she is diagnosed with the cancer, but after radiation, after these very strong nuclear medicines, the vital force is weaken day by day. So those quality of life was ruined by all of the well-known side effects like hair loss, mouth sores, nausea, vomiting with resulting cachexia. All these things are happen after these radioactive substances, that is radiations or chemotherapies. So if there is a deep suppressions by these medicines, it is very difficult for the homeopath to help patients whose vital force is very, very beaten down, and difficult to prove the effectiveness of homeopathy in treating cancer. Nuclear medicine, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस आ जाती है, इस तरह के केसेस में जब फोर्सफुली सेल्स को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है, पेशेंट की जो एक्चुअल स्थिति है, वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। और डाउन जाने की वजह से जो रिजल्ट्स एक होम्योपैथ दे सकता है ड्यूरिंग दिस कंडीशन, जो वाइटल फोर्स है वो टोटली रून्ड आउट हो जाती है, और इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते जो कि होम्योपैथ कैपेबल हैं रिजल्ट्स देने के. So, but still there are lots of homeopaths out there who are treating cancer, or they are treating cancer in very successful way. नेक्स्ट जो पोर्शन है, अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन से आगे चले जाएं, दैट कंडीशन इज सर्जरी. सर्जरी इज आल्सो ए टाइप ऑफ सुप्रेशन, बिकॉज आज के दिनों में
आप देखेंगे कि सर्जरी अनवांटेडली हो रही है। सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि सर्जरी करवा लो, एंड सर्जरी इज नॉट द एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। Up to 1880, surgery was considered a last resort. 1880 तक सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन था किसी के लिए भी जाना। With the discovery of sterile techniques and anesthesia, surgery has become the preferred mode of treatment. जैसे जैसे स्टेरॉइड टेक्निक आ गई, जैसे जैसे एनेस्थीसिया आ गया, वैसे वैसे सर्जरी एक प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट बन गई। Glamorized in the media and often expected by patient before medical options are given a chance. जब तक कि एक मेडिकल सिस्टम आपको कुछ ट्रीटमेंट दे, उस दौरान पेशेंट जो है या मीडिया भी इसको इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि पेशेंट ज्यादातर किस तरफ जाते हैं? सर्जरी की तरफ। मेडिसिन की प्रेफरेंस कम हो गई, बट सर्जरी ओनली रिमूव द एंड प्रोडक्ट। अगर कोई ट्यूमर हो गया है, अगर कोई कैंसर की डिसीज हो गई है, कुछ और हो गया है, तो मोस्टली these are the end products. These are the end products and not the imbalance of the body which is create them. कि जिस imbalance ने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, जिस imbalance ने उस ट्यूमर को प्रोड्यूस किया है, वो अगर बैलेंस हो जाए तो इस तरह की जो कंडीशन है वो रिवर्सिबल भी हो जाती है। There are lots of cases. I have seen lots of cases like that in which the big tumor is reduced in size in few days. Cancer is reversible in few conditions. Even if the patient is on bedridden, homeopathic medicine can convert the advanced pathology too, but depends on the physician, knowledge, depend on the knowledge of organ of medicine, how we can treat these kind of patients. The human body is a work of art which should not be invaded with the surgeon knife except the last resort. So most of us think that if there is any tumor, go for surgery. If there is any blockage in the nose, go for surgery. Is any warts, any keloid, go for surgery. Because surgery should be the last option before we have to try different types of method. Operations tend to be suppressive because they close an outlet of the release of deeper internal disorder before the cause is cured. Surgery also a type of suppression. When this is done by unnecessary way, जहां जरूरत भी नहीं है वहां पर अगर सर्जरी होती है तो ये एक तरह का सुप्रेशन पैदा करती है। और आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर साहब कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, दोबारा डेवलप हो गया, कीमोथेरेपी भी हो गई थी, रेडियोथेरेपी भी हो गई थी, मगर फिर से कैंसर पैदा हो गया। ट्यूमर्स थे मेरे यहां, छोटे छोटे गांठें थी, ऑपरेशन किया फिर पैदा हो गई। इट मीन्स कि something is behind it. Something is there which will recreate these tumors. Something is there which reproduce tumors, warts, cancer, even cancer.
The surgical interventions are necessary including the removal of obstruction. जो सर्जरी है उसका सबसे बड़ा रोल है कि अगर if there is any obstruction, for example intestine, we can take the help of surgery. Volvulus, embolisms, closed internal abscess. If there is a closed internal abscess, we can release the pus with the help of surgery. Adhesion, repair of fractures, pyloric stenosis, and life-saving means to re-establish the vital signs. Here surgery is necessary. If there is a blockage, we can open the block with the help of surgery. Cataract surgery is not suppressive since it involves the removal of dead tissues. Although homeopathic treatment could have cured the catarrh if initiated early enough. Second thing is surgery to remove a closed internal abscess. Surgery help to open the closed abscess like Pyosalpinix suppress appendicitis with abscess formation and empyema. May or may not be necessary, depending on the indication's remedy. For example, if the salicia is indicated, it should not be given because it is well-known tendency that it hastens suppression. It hastens suppression and could lead to spreading the circumscribed area of suppression. Here surgery should be performed instant. Calcarea card should be safely given because of a remarked power of absorbed pus. It absorbs the pus. Salicia increase, establish the suppurations. So, in this condition, we should know that where the surgery is necessary and where surgery is unnecessary. Both are different stories. But if the surgery is unnecessary and they will perform it, it will produce suppression and this condition will reappear. The condition will reappear. So, we cannot say that patient under complete homeopathic care never needs surgery. We can't say because we know that where surgery is very, very necessary. If the person is met with an accident, surgery is needed. The management is needed. That's why a homeopathic physician should know the management before giving the medicine. We should know the management because management is more important than anything else. Sometimes we don't need medicine. We just need a management. I have seen one case of mouth cancer in which the doctor only managed the case. He didn't prescribe medicine for 6 months. And the patient was 90% recovered. 90% recovered just with the management. So he don't need any medicine for 6 months. Just management. Change the diet, change the hygienic condition of the mouth, remove all the obstacles, and recovery start. And this happens in every case if we can manage the case. So, because most conditions require and operations are the last stage of disease and the structural end product rather than the functional beginning.
Any homeopathy work more brilliantly in the functional stage of disease when there are many symptoms and few reversible organic changes. Yes, homeopathy can work over there. So next is palliation. This is very important. Palliation. Never forget that palliation of a curable case is suppression. कि अगर क्योरेबल केस में इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसे दबाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, that is suppression. That is suppression. That it may be done quite as effective by homeopathic remedies as by allopathic remedies. और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप होम्योपैथ हैं तो आप पैलिएशन नहीं कर रहे, आप सुप्रेशन नहीं कर रहे. Yes, you are doing suppression. If the condition or if the medicine used by a person who don't have knowledge of organon of medicine, who don't have knowledge of disease, who don't have knowledge of prescribing the remedy, who don't have a knowledge of materia medica, they can suppress the condition. It will mask the true picture of the disease and complicate it to the point where a true cure will be hard to find. And there are lots of examples given by Dr. Hahnemann in his chronic disease when the condition is suppressed by external means and the patient is suffer from deafness, cancer, asthma, paralysis, coma, somnambulism, there are lots of examples there. The condition is suppressed and the new disease is produced. Next is thyroid and adrenal support therapies. Glandular suppression जिसे हम बोलते हैं. The symptoms of low thyroid or adrenal function can be masked by giving glandular extract or synthetic imitations. The results is not only suppression but also weakening of the gland as it becomes more and more dependent on the external source of hormones. Hypothyroidism, adrenal suppression. When these people getting hormone from outside, then how our natural gland will produce the hormones? Because every hormonal imbalance, there is a causative factors. There is an obstacle to cure. I have one case. One person who came from officer job in Canada, after 6 months of hard life in Canada, he suffered from hypothyroidism because he has only one thing in his mind: what I am in India and what I am doing here. And that person, I have given him Ignitia 1M potency, and after 15 days the thyroid levels goes down in natural form, and it's almost 5 years he is enjoying his life. So when you have a evident cause, अगर आपने बोगर साइनोप्टिक की को पढ़ा है, जाना है,
तो आपको पहले अक्षरों में, साफ अक्षरों में वहां पर लिखा है कि इफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द एविडेंट कॉज. This is not a simple cause, this is an evident cause, strong cause. You should have a strong cause जो कि आपको ये कंफर्म कर दे कि इसके बाद कुछ नहीं है. Strong evident cause. The patient will need to take the hormone supplement for life in ever increasing dose. और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हार्मोन्स की किसी को देते हैं 25, 50 mg, फिर 100 mg, 120 mg, वो टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है क्योंकि बॉडी की डिमांड अकॉर्डिंग टू द एज बढ़ेगी. फिर what we are doing, we are suppressing the condition. I will discuss one case with you guys. A 40-year-old woman with hypothyroidism. Her condition start with the sign of hyperthyroidism. उसको hyperthyroidism हुआ था. उसके बाद उसको मेडिसिन दी गई, रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया गया. उसके बाद कंडीशन थायराइड की सुप्रेस हो गई. सुप्रेशन के बाद वो हाइपोथायरॉइडिज्म में चली गई. She did not require replacement therapy, however, as long as she was under homeopathic treatment in her native country. She stayed well until she moved to US. And the physician start Synthroid 0.05 mg daily. And when she fell, उसके बाद उसने वहां पर किसी होम्योपैथ को मिला, मगर जब उसकी हिस्ट्री देखी, क्योंकि एलोपैथी में हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता वहां पर. जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो उसकी हिस्ट्री में फर्स्ट कंडीशन में लॉट्स ऑफ ग्रीफ मिला. उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, उसका अबॉर्शन हो गया, उसका अबॉर्शन करवा दिया गया अगेंस्ट हर विशेस. एंड उसके बाद उसका अपना डाइवोर्स हुआ. Each of these losses was followed by thyroid problem. उसके बाद उसकी ये थायराइड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. पहले उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स, उसके बच्चे की डेथ अगेंस्ट विश, और उसके बाद उसको अपना डाइवोर्स का फेस करना पड़ा. So no physician had required inquiry this causation. किसी भी फिजिशियन ने उसके पीछे का ये जो कंडीशन थी उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा. सो हर केस कॉल्ड फॉर अ क्लासिक ग्रीफ रेमेडी. उसको नेट्रम्यूर दिया गया और नेट्रम्यूर LM1 पोटेंसी फॉर सकशन. उसके बाद उसके हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम वापस आ गए एंड धीरे 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 वो सारी कंडीशनें चली गई. So now from last 10 years she is enjoying her life. अब सवाल उठता है कि if there is a suppression, ध्यान से सुनिएगा, if there is a suppression, किस तरह के सिम्टम्स को टारगेट करना है? क्या जो कंडीशन सुप्रेस हुई उसको टारगेट करें या फिर जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंडीशन है उसको टारगेट करें? आई हैव 2 एग्जाम्पल. मैं आपके साथ दोनों चीजों को डिस्कस करूंगा. The sequel of suppression are too easily accepted as sort of evolutions of primary disease, even though allopathic treatment is actually responsible. चाहे it doesn't matter who are treating the disease, homeopath or allopath, the incapable homeopath and capable allopath both can produce suppression.
So shall we prescribe the symptom picture before the suppression took place? अब सवाल ये उठता है कि हम जो सिम्टम ले रहे हैं, हम जो केस ले रहे हैं, क्या सुप्रेशन से पहले जो कंडीशन थी पेशेंट की उसको टारगेट करें, और shall we use the method of suppression as symptom in our totality? ये सवाल उठेगा. और shall we prescribe primarily for the present post suppressive syndrome, या फिर सुप्रेशन के बाद जो सिंड्रोम पैदा हुआ है उसको टारगेट करें. अब 3 सवाल है हमारे पास. पहला कि सुप्रेशन से पहले जो कंडीशन थी उसको देखा जाए. दूसरा कंडीशन है कि सिम्टम टोटलिटी को देखा जाए, या फिर सुप्रेशन के बाद जो कंडीशन पैदा हुई है उसको देखा जाए. अब ये 3 हमारे पास सवाल है. तो अगर हम ओल्ड होम्योपैथ्स की बात करें तो मेरे पास एक बड़ा सुंदर केस है डॉक्टर कॉरल डेनहम का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. और ये केस है डीफनेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर उन्होंने हर एक चीज को के बारे में बताया है. हम वो डिस्कस करेंगे पहले. दिस इज अ डीफनेस केस. कॉरल डेनहम का केस है. अ पर्सन स्मॉल एंड but well proportionate and of good constitution, healthy since his 9th year. 9 साल तक बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था. Has been deaf since he was 4 year old, और उसको 4 साल की उम्र से सुनाई नहीं दे रहा. Then 3-year-old age, जब वो 3 साल का था, he had an eruptive disease of the whole scalp. उसकी स्काल्प के ऊपर eruptions पैदा हुई, which after resisting for a year all the milder method of allopathic treatment, she was finally caused to disappear. Allopathic treatment दिया गया, पूरी तरह से eruptions चले गई. In the following manner, उसको क्या किया गया? A tar cap was placed upon the head, and when firmly adherent to the scalp was violently torn off the scalp come with it. उसके बाद उस तार कैप लगाई गई. जब वो चिपक गई उसको फोर्सफुली निकाल दिया गया. Leave the whole scalp raw. This raw surface was moistened with the saturated solution of nitrate of silver. नाइट्रेट ऑफ सिल्वर लगा दिया गया, एंड eruptions डिड नॉट अपीयर. eruptions नहीं आई, बट फ्रॉम दैट टाइम द चाइल्ड वाज डेफ. उसके बाद जो कंडीशन थी वो बहरेपन में तब्दील हो गई, बदल गई. द कंडीशन ऑफ द यूथ नाउ एक्साइटेड द earnest solicitude of his friend. His inability to move in society, बाहर नहीं जा सकता था, और टू गेट ए सिचुएशन इन बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज डीफनेस. ना ही किसी बिजनेस में जा सकता क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता. हैज प्रोड्यूस्ड ए मॉर्बिड स्टेट ऑफ माइंड. इट प्रोड्यूस ए डिफरेंट स्टोरी ऑफ माइंड, डिफरेंट कंडीशन ऑफ माइंड, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. ही ब्रूड ओवर हिज इन्फर्मिटी एंड seclude himself even from his own family. वो दूर होता गया सभी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी से दूर होता गया. Under these circumstances, he applied to me to be cured of his deafness. His parents' condition as follow, जो उसके पेरेंट्स ने उसके बारे में बताया. He is quite unable to hear ordinary conversation. जो simple conversation है ये इसको सुनाई नहीं देती. And has never heard a sermon in his life. A loud tickling lever
watch can be heard at a distance of 3.5 inch from either ear. अगर कुछ loud चल रहा है तो 3.5 इंच से इसको कुछ सुनाई देता है. On application of the watch to his forehead or to his teeth, he hears it distinctly. Occasional buzzing noise in front of his ear. A physical examination जब उसका किया गया तो मिला the external meatus is abundantly supplied with the soft normal wax. जो external meatus था उसमें soft wax थी. Membrana tympani थी वो wide थी, opaque थी and evidently thickened. The part is thickened. And when the patient attempt to inflate the middle ear, जब उसको नाक और मुंह को बंद करके इसको जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कान जो है बाहर की तरफ फैल जाते हैं. When the patient attempt to inflate the middle ear, the membrane tympani become but very slightly convex. बाहर की तरफ वो slightly move करती है. And it is impossible to distinguish its distended blood vessels. और blood vessels को भी देखा नहीं जा सकता. These are evidently being deposited in the substances of membrane. On examination of throat, जब throat का examination किया गया, it appeared that orifice of Eustachian tube is free. वो free थी, उसमें कोई problem नहीं थी. February 3rd, 1857 उसको एक डोज दी गई मजीरियम 30 की. 24 को जब वापस आया, he think he hear better. Every sound seemed much louder than before. Here my watch at a distance of 4.5 inch from the right ear and 4.25 from the left ear. No medicine. उस टाइम उसको कोई मेडिसिन दी गई. मार्च 1 को उसको एक डोज, क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, एक डोज और 30 की दी गई. उसके बाद हेयर माई वॉच फ्रॉम द राइट ईयर 6.5 inch and with left 7 inch. No medicine. April 20, hear my watch with the right ear at the distance of 10 inch and with the distance of left is 14 inch. September 28 को इंप्रूवमेंट रुक गई. उसके बाद मेजीरियम 33 ग्लोब्यूल्स उसको फिर दिए गए. उसके बाद जून 26, 1858 he was hearing 14 inch from right side and 24 inch from left side. Deafness returned when he take cold. उसको ठंड लग गई, उसके बाद दोबारा से डीफनेस आनी शुरू हो गई. उसको फिर एक डोज दी गई मजीरियम 30 की. मार्च 19, to his surprise on going to church, although seated at the extreme end of very building, he distinctly heard the whole sermon for the first time of his life. On physical examination, the opacity of the membrane and tympani is found to be disappeared and its elasticity has been sensibly increased. On May 25, he was perfectly restored. अब उन्होंने इस केस के बारे में पूरी एक जर्नी बताई. हाउ टू फाइंड आउट द मेडिसिन. द सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट रिस्टोर टू इन दिस इंस्टेंस वारंट ए न्यू रिमार्क अपॉन द रेशनल. Here was a case which present a practitioner apparently nothing on which to base the prescription. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उसको प्रिस्क्राइब कर सकूं. There was a thickened membrane tympani. उस फर्स्ट था कि जो membranous tympani थी वो थिक थी, nothing more, कुछ और नहीं था. The work of thickening had probably been accomplished year ago. सालों पहले उसको ये जो प्रॉब्लम थी वो थिक हो गई थी. Here was a pathologico-anatomical condition.
अब यहां पर डॉक्टर हैनेमन ने जो एफोरिज्म नंबर 6 में कहा है कि नॉलेज ऑफ फिजिशियन is very, very necessary for homeopaths, especially homeopath, because he should know the pathology plus anatomical condition of the patient. We should know both condition. We should know pathology. We should know the physiology, anatomical. Because if we see anything different, because if we know the common thing, then we can understand what is uncommon. If we know the common, then only we can recognize the uncommon. So this is a pathological anatomical condition, but no pathological process. Pathology थी, anatomical condition थी, but actual pathology नहीं थी वहां पर. And consequently, there was no abnormality performed function. कोई abnormality नहीं थी. On the other word, no symptoms of disease. Symptoms, disease के भी symptom नहीं थे. From which to draw indication for the treatment, जो कि हमें treatment के बारे में बता पाती. The pathological anatomical condition threw new certain light on pathological process which had produced it. Just as a knowledge of the town at which a traveler has arrived gave no certain clue to the road by which he reached in. और आप एक रास्ते पर आ गए हैं, नया शहर है और आपको कुछ भी नहीं पता भी मैंने कौन से रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ जाना है. इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ा डॉक्टर कॉरल डेनहम को. बट हैनेमन एडवाइज हिज डिसिपल. अब जब आप इस तरह के मोड़ पर खड़े हो गए हैं तो फिर आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. क्या करेंगे अब? आपकी जितनी नॉलेज है मटीरिया मेडिका की, रिपर्टरी की, विल नॉट गिव यू अ सोल्यूशन. जस्ट वन थिंग गिव यू अ सोल्यूशन, दैट इज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. So, Hahnemann advised his disciple in history of case is often of the utmost important in determining the treatment. अगर आपको इस तरह के केसेस को डील करना है, you should know the history of the patient. वो पैदा कैसे हुई है, हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, वो कैसे इस तरह की कंडीशन में फंस गया, हिस्ट्री बताएगी आपको. देन in the case before us, the coincidence between the violent removal of the tinea capitis by nitric of silver and the appearance of the deafness was the mark to escape notice. अब दो कंडीशनें पक्की थी उसके सामने कि एक तो जो टीनिया कैपिटस पैदा हुआ उसको सिल्वर नाइट्रेट से सुप्रेस किया गया, और दूसरी कंडीशन थी कि उसकी जगह पर डेफनेस पैदा हुई है. ये क्लियर था. इट कुड नॉट फेल टू अकर टू द प्रैक्टिशनर दैट द स्कैल्प डिजीज वाज वन फेज ऑफ सोरिक अफेक्शन. ये पक्की थी कि वो सोरिक अफेक्शन था. एज हैनेमन would have called it, or it called dyscrasia, as a modern school of German pathologists would say, as a doctrine of dyscrasia is but rehashed Hahnemann's soric theory, and that his affection disturb in its localization upon the scalp and transfer itself to the tissue of the ear. और पैथोलॉजी के अनुसार कि जो कंडीशन सर पे थी वो डिफरेंट रूप में, डिफरेंट कंडीशन में कहां चली गई, ईयर में चली गई. ईयर अफेक्टेड हो गया, डीफनेस आ गया. नेक्स्ट, इट फर्दर अकर टू मी दैट सिंस इन दिस लेटर लोकलाइजेशन देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंडिकेशन फॉर द प्रिस्क्रिप्शन. जो कंडीशन बदल भी गई उसमें भी कोई इंडिकेशन नहीं थी. There was no indications to prescription. Just he checked everything and didn't find any clue of medicine. I might find such indication in the phenomena of former localization scalp
अपॉन द स्काल। तो उन्होंने क्या किया कि जो सुप्रेशन से पहले की कंडीशन थी उसके बारे में जाना। I accordingly addressed myself to the task of getting a complete picture of his affection, and which had disappeared 13 years before. By good fortune, mother of the patient was possessor of a good memory and very excellent power of descriptions, and from here I learned that. तो उन्होंने उसकी मदर से पूछा, तो लकीली उसकी मदर को एक एक चीज परफेक्टली याद थी। तो उसने क्या कहा उसके बारे में, शी सेड थिक वाइट स्कैब, हर्ड एंड ऑलमोस्ट हॉर्नी, कि उसके सिर के ऊपर जो स्कैल्प के ऊपर इरप्शंस थी वो थिक थी, उसके ऊपर वाइट स्कैब थी और इस तरह से थी जैसे कि कोई सीन इतना सख्त होता है, इस तरह से उसकी स्कैल्प थी। कवर्ड विद होल स्काल्प, जो उसने पूरी स्काल्प को कवर कर रखा था, पूरी स्काल्प को। देयर वॉज फिशर इन द स्काल्प, फिशर भी थे स्काल्प पे। थोरो विच ऑन प्रेशर दैट एक्सक्लूड थिक येलोइश पस, जब उसको दबाते थे तो उसमें से येलो कलर की पस निकलती थी, विच वर वेरी ऑफेंसिव, बहुत ऑफेंसिव थी। देयर वॉज great itching and disposition to tear off the scab with fingernail, और itching बहुत थी और उसके जो स्कैब थी वो फिंगरनेल से निकल आती थी। स्पेशली ट्रबलसम एट नाइट, रात को उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। अब ये उसके पास कंडीशन थी जो कि उसको हिस्ट्री में मिली पेशेंट की। The remedy which correspond most closely in its pathogenesis with the above group of symptoms is undoubtedly miserium. अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है वैल्यू ऑफ सिम्टम। किस सिम्टम को वैल्यू दी जाए, क्योंकि उसको प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, वहां पर कोई एविडेंस नहीं था, कोई इंडिकेशंस नहीं थी जो अब उसके सामने थी, कोई इंडिकेशन नहीं थी। सो ही शुड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, बट हाउ, किस तरह से प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि कुछ भी नहीं है वहां पर। डेफनेस है बट नो सिम्टम्स, नथिंग इज देयर। सो in the introductions of the proving of the drug in chronic disease, इसलिए ये किताबें बहुत जरूरी हैं किसी भी होम्योपैथ की लाइफ के लिए। क्रॉनिक डिजीज, मटीरिया मेडिका प्यूरा, जितने ऑथर्स रिचर्ड हॉज थे, कॉर्ल डेनहम थे, इनके लेक्चर्स, इनके प्रिस्क्रिप्शंस, इनके केसेस, क्रॉनिक डिजीज में जो डॉक्टर हैनमन ने केसेस दिए हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन वॉल्यूम 4 हैनमन रेकमेंड इट फॉर द मोस्ट eruptions of the scalp, and in the proving volume 5 many symptoms point to a similar eruptions itching, especially at night, and conclusive group of pathogenetic symptoms as she follow. From the new proving of Meserium, Dr. Weil of Rome, of which the manuscript was shown me by his son, Dr. Weil, had covered over with the thick leather-like crust, under which thick white pus collected here and there. This is the character of eruptions of Meserium. And the hair is glued together. On the head, great elevated, irregular white scab under which pus collected in quantity and become offensive and breed wormness. कीड़े पड़ जाते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। The child keeps scratching his face and head at night and continuously tear of the scab. लगातार खारिश करता है सिर पे। The resemblance between these group of symptoms was so striking that Meserium was at once selected as a remedy for this case of deafness.
जब इंडिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उन्होंने हिस्ट्री को सामने रखकर, हिस्ट्री में क्या था, वो किस तरह से पैदा हुई, कौन सी इरप्शंस थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, उसको सामने रखकर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया गया. Just as the scalp affection had been still in its original form and had been immediately object of the prescriptions. And it is not frequently occurred that we are called upon to prescribe for what seem rather results of morbid actions than active disease. And in such cases, it would seem that we may often successfully base a prescriptions upon the symptom of the disease condition which no longer existed, but which form in reality a part of case. होप सो कि ये केस आपके लिए सुप्रेसिव केसेस को डील करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बनेगा. This will give you a very, very wonderful hints how to deal with suppressive condition. But one more condition is here. Hope so you guys will understand. But there is no firm rules. The patient may have had a condition suppressed 10 years ago. 10 साल पहले उसको प्रॉब्लम हुई थी. With a lifestyle, pathology, everything else changed in the meantime. In such a case, you should try prescriptions on the present symptom picture. आज की कंडीशन में अगर आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, तो उसके 10-20 साल में उसका स्टाइल, उसके खाने पीने की तरीका, उसकी हर एक चीज बदल गई है. Try to find the present condition, but it is clearly indicated remedy. If there is a clearly indicated remedy, go for it. But if it is failed, अगर वो फेल्ड होती है, अगर वो वर्कआउट नहीं करती, then you will have to dig the symptom period to the suppression. Suppression से पहले की जो कंडीशन थी, देन आपको वो टारगेट करनी है. You have to target that condition now. So this is the difference. What Hahnemann tell us, what Hahnemann gave us clue in chronic disease, how he differentiate, and think about what kind of person he is, how he observed the cases, how he deal with the cases, how he recognized the suppression, how he recognized the symptoms, how he differentiate the symptoms. So how we know? We just only know when we read these books. Chronic Disease, Organon of Medicine is wonderful books, and lesser writings of the Hahnemann. These are the basic books. So as we'll show in the following diagrams, the suppression always drive the disease to the deeper level. For example, an eczema case treated with the cortisone creams, pills and injection often lead to asthma at the second level of the plane. जो कि आपको chronic diseases में जो cases हैं उसमें भी मिल जाएगा कि eruptions को जैसे ही हम destroy करते हैं, then most probably the person who suffers from asthmatic condition. It doesn't means कि वो अस्थमा की तरफ ही जाएगा. It may be a paralysis, it may be a coma, it may be any severe condition, it may be a convulsions. But the most important thing is that we have to know the pathogenesis of the drugs and the pathogenesis of the disease. If we know both these conditions at the same time, then we can differentiate.
This is not only simply learning of rubrics and learning of materia medica is enough. No. If the knowledge of physician, it should be complete in every single way. You should know the diagnosis too. You should know the what type of disease you are dealing with. You should know the management of the case. You should know the if we fail, what we should do. कहाँ जाएंगे फिर? क्या करेंगे? And we should know the suppression. We should know the palliations too, because हर केस को ठीक नहीं किया जा सकता. So we should know the prognosis of the case too. और ये पता कैसे चलेगा? जब आप किताबों से रूबरू होंगे, जब आप किताबों के साथ, आपको पता होगा कि जो बेसिक चीजें हैं वो क्या हैं. What are the basic things? Next, for the past 100-year allopathic medicine has come to the conclusion that asthma and eczema are both different things. They think that, but in homeopathy, they are interconnected. These are not both different things. We are interconnected. One suppressed and other condition will rise. So, this is today's discussion. There are lots of more things. Level of suppression we will discuss in the next chapter. And hope so you enjoy today's session. और मेरी ये कोशिश है कि every homeopath should learn the basic books. Basic किताबें, most probably if you have a knowledgeable repertory, बहुत बाद में आती है. Basic books will help you, and you should know before prescribing management of the case. Management is very, very important. And what Hahnemann teaches in daily basis of practice, everyone should know. Everyone should read Hahnemann's book. It may be a materia medica pura, it may be a chronic disease, it may be a lesser writings, organon of medicines. जरूर पढ़ें. Carl Denham को पढ़ें, Richard Hawk को पढ़ें. They are they have very unique way of describing the medicine. डॉक्टर नर्क की रिपर्टरी आप सभी के पास हो, जिन्होंने डॉक्टर हेरिंग्स के गाइडिंग सिम्टम को एक लय में उतारा है. वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट जो भी हम सेशन रखेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि सुप्रेशन के इस टॉपिक को और डीपली समझा जाए. और hope so it will help you in your daily practice. You will understand the management and character of the disease and how to deal with these cases. So if you guys have any question regarding today's discussion, please ask. I definitely discuss these questions, and have a great day. Thank you.